या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्याय जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेषाम् आगतानां स्वागतं करोमि। गुरुभ्यो नमः। नमस्कार गुरुभ्यो नमः। नमस्कार। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी गदाहं गुरुजी नमस्ते अभवत्। गुरुजी। भवान् गुरु एव किल। नमस्ते महोदय। नमस्ते 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 महोदय। नमस्ते नमस्ते महोदय। इदानीम् अद्य पाणिनीय धातुपाठः सस्वरः अस्ति। सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति खलु? आम् महोदय। अत्र भू प्रथम धातु इति केवलं मङ्गलाय दीयते। भू इति यदा वयम् अस्माकं श्लोकः अस्ति गायत्री मन्त्र ओम भूर्भुवः स्वः। भू इति किञ्चित् पवित्रीकरणं कृते इति अस्ति। मंगलाष्टकं मंगलं भवेत्। अनेन भू इति धातु आदौ दत्तमस्ति। भकारः इति किञ्चित् मंगलदायकः इति सर्वे मन्यते स्म। भूसत्तायाम् इति प्रथमं धातुः भवादयो धातुः भू भवादिगणस्य धातुः। इदानीं तस्य किं लिखितमस्ति? उदात्तः परस्मैभाषः। एतस्मिन् कोऽपि स्वरस्य व्यञ्जनस्य इत् संज्ञा न भवति खलु भूसत्तायाम् इति धातौ। अतः केवलं लिखितमस्ति भू इति। तस्मिन् कुत्रपि अनुदात्तः नास्ति, स्वरित् नास्ति। एकलेव एकाच धातु अस्ति। एक एव अचः अस्ति। ओन्ली वन स्वर, एकाच धातु। सो भू सत्तायाम् अतः एकः स्वरः अस्ति, तस्यापि इत् संज्ञा न भवति। तथि अतः उदात्तः अस्ति। स्वरः उदात्तः अस्ति। अस्माभिः पूर्वं किं पठितम्? अनुदात्तं गीतम् आत्मनेपदम् त्वरित कर्तृभिप्राये क्रियाफले। अनुदात्तं गीत यदि भवति चेत् आत्मनेपदी प्रत्ययाः भवन्ति। स्वरित अथवा इत् भवति चेत् उभयपदी प्रत्ययाः भवन्ति। शेषे परस्वेशात् कर्तरि परस्मैपदम्। अत्र उदात्तः अस्ति, तत्र अनुदात्तः अपि नास्ति, स्वरित अपि नास्ति चेत् उदात्तः अस्ति। अतः शेषात् कर्तरि परस्मैपदीम् अनेन सूत्रेण परस्मैपदी प्रत्ययः प्राप्नोति। इदानीं now how the dhatu is there attached in the original dhatu path. तवर्गीय कवर्गीय एतेन माध्यमेन भवति। It's not ABCD or kapha gaga. तवर्गीय
आदौ तवर्गीय धातु अस्ति अत्र एधौ वृद्धौ स्पर्धा महोदय संघर्ष नी धातु अस्ति एक अक्षरं धातु so that is ओरिजिनल धातु इज अणीय प्रापणे णीय प्रापणे हा नीय प्रापणे यत् ञकारस्य इत् संज्ञा भवति अनेन स्वरित इत कर्तृभिप्राये क्रियाफले अनेन सूत्रेण उभयपदी प्रत्ययः भवन्ति भवति अनन्तरं णोनः सूत्रेण णकारस्य नकारः भवति अनेन नी इति स्थीयते अवगच्छन्ति वा आम् महोदय उपरितः गच्छतु अत्र पश्यन्तु एधौ वृद्धौ हकारोत्तर अकारः अस्ति अत्र पश्यन्तु सर्वे धातवः औपदेशिक धातवः अस्ति उपदेश अवस्थायां खलु तर्हि उपदेश अवस्थायां सत्सु वयं तेषाम् इत् संज्ञा कर्तुं शक्नुमः अस्माभिः कर्तव्यम् इति एधौ वृद्धौ वृद्धौ इति अर्थः अस्ति वृद्ध्यर्थे एध इति धातुः धकारोत्तरः अकारः यः विद्यते सः अनुनासिकः अस्ति अनुदात्त अपि अस्ति सो केन सूत्रेण भगिनी मा वदतु इदानीं केन सूत्रेण तस्य इत् संज्ञा भवति भवानी भगिनी न मानेश्वरी भगिनी वदतु इत् संज्ञा भवति अनियन वर्ध ar that I don't know संज्ञा I don't know how to tell but वृद्धौ इति एतत् मध्ये वर अनियर or वर ar धातु एध what my question was the it संज्ञा only महोदय अहं प्रयत्नं करोमि वा महोदय no let me ask someone else for trying also एध वृद्धौ अत्र कः स्वरः अस्मिन् अत्र उपरि अनुनासिकः अस्ति अनुनासिका अस्ति वृद्धौ मध्ये औपदेशिका वृद्धौ इति आवश्यकं नास्ति एतस्मिन् कस्य स्वरस्य इत् संज्ञा भवेत् अनुनासिक अकारस्य अनुनासिक अकारस्य केन सूत्रेण अभवत् सूत्रम् अहं न जानामि क्षम्यताम् like I can't remember क्षम्यतां महोदय सोमशेखर महोदय भवान् जानाति वा उपदेशे जनुनासिक लक्ष्मी भगिनी मा let me call someone else also हाँ जी सोमशेखर महोदय अन्य कोऽपि मा वदेत् अजनुनासिक इत् संज्ञा इति सूत्रेण उपदेशे जनुनासिक इत् उपदेशे जनुनासिक इत् जनुनासिक उपदेशे अनुनासिक इत् अनुनासिक अच इत् भवति इति उपदेश अवस्थायां सो अकारः अनुनासिकः अस्ति अनेन उपदेशे इति सूत्रेण तस्य इत् संज्ञा अजाता पुनश्च सस्वरः यस्य स्वरस्य इत् संज्ञा भूत् सस्वरः अनुदात्तः खलु अनुदात्तः अस्ति एतेन कारणेन आत्मनेपदी प्रत्ययः भवन्ति So how to read a Paniniya Dhatu Patha? So these are they've been given a list of dhatus. Now atra pashyantu itye iti edhadayah udatta anudattetah. Oh. इति एधादय धातु एध आदय एध आदौ यस्य सः अथवा येषां ते एधादयः धातवः उदात्ताः अनुदात्तेतः. Now what means the udattah?
And what is the anudattetah in this line? Bhavani Bhagini, please. उदात्तः इत्युक्ते अत्र स्वरितचिह्नं वा अनुदातचिह्नं वा न अस्ति, तदेव उदात्तः अस्ति, तदितु उभयपदी भवति। न न क्षम्यताम्, उदात्तः इत्युक्ते परस्मैपदी एव भवति। अत्र अनुदाते परस्मैपदी वा? किमर्थम् इत्युक्ते न परस्मैपदी न, अनुदात्त आत्मनेपदी अस्ति। किमर्थम् इत्युक्ते अत्र अनुदात्ते अस्ति किल, तदेव एदौ इति धातौ मध्ये द अधः रेखा अस्ति, अनुदात्तचिह्नम् अस्ति, अतः तद् आत्मनेपदी रूपं प्राप्नोति। अत्र किम् उक्तम् इत्युक्ते अनुदात्तेतः इत्युक्ते ये सर्वे धातवः अनुदात्तेतः अस्ति, अनुदात्तः इत्संख्या प्राप्नोति, तदेव अत्र उक्तमस्ति इति अहं मन्ये। सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति खलु? आं महोदय। यस्य स्वरस्य इत् संज्ञा भूत् स स्वरः अनुदात्तः स्यात् अथवा अभवत् अत्र अस्ति। अनेन कारणेन आत्मनेपदिनः प्रत्ययः प्राप्नोति। But in this list, all the dhatus are Atmanepati dhatu, Mahodaya. एधादयः, एधादयः. Now I will come to udattah. Why it is said udattah anudattetah? Udattah comes in the later stage when we will learn the ahad dhatu prakriya. If it is meant for idagama. Where you dhatu is a udattah anudattetah, so it will have in the drit prakar ikarasya agamaha. Udattah anudattetah edhishyate vartishyate पठिष्यते न पठिष्यते न वट् धातु दकार कः अस्ति परस्मैपदी धातु अस्ति आम् 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 एधिष्यते वर्तिष्यते so the first उदात्तः अथवा अनुदात्तः स्यात् सः इडागम भवति वा न इति दर्शयति। महोदय अत्र एत् धातु उदात्त इति ए न ए इस् उदात्त इति एधादयः इति एधादयः इत्येधादयः. In the last yeah. No, the list starting from edha vruddho dhatu till what kantha shlaghayam are called edhadaya dhatu. Okay. What I understood was A is udattah and so, no, A is udattah. Edha is only one ekacha dhatu and another akara dhakarottara akara asit yasya it sanya bhu saswaraha anudattah. Okay, right. महोदय धकारोत्तर आवश्यकं वा? Sir, पुनरेकवारं वदतु महोदय. Sir, only one doubt, sir. This udatta anudatta testah, that is udatta plus as well as anudatta itana. Anudatta plus it equal to anudattetah. Correct. So yasya swarasya it sanya bhut saswaraha anudattah syat. For example, in the etha, we did the it sanya of a anunasika akara, which was anudatta. And that is the reason it got the atmanepadi pratyaya. Correct. So now what is it udatta? That portion is clear. Anudattetah, udattetah, swarittetah. We will find it three times. Yes. Udattetah, swarittetah, anudattetah. Three yes. times. Mahodaya, So there are three types of swaras: swarit, udatta, and anudatta, or whatever be the reason form you take. Udatta, anudatta, and swarit.
Udatta, there is no marking anywhere. Anudatta, there is marking underline Under. below the varna. Swarita is a Ah. double marking or single marking on the top of the varna. Top of. It's like अत्र पश्यन्तु कौटिल्ये इति लिखितमस्ति खलु शैथिल्ये इति हकारोत्तर इकार अस्ति सः स्वरित अस्ति. Just not the dhatu, that's the meaning. शैथिल्ये. Okay? उपरि एक मात्रा अस्ति सर. हाँ, एक मात्रा अभी भवेत्, द्विमात्रा का भी भवेत्. So this is swarit. महोदय उदात्तः तदपि The first udatta will be the first swara, adi swara. Whether the adi swara is a udatta, anudatta or swarit. And the anta swara, इसका इत संज्ञा हमने किया, वो स्वरित उदात या अनुदात था. दोनों का डिपेंडेंसी है इसमें. So by just looking at the upadeshik dhatu, you can just see whether this dhatu will get an atmanipadi pratyaya, parasmai or both, and whether it will have an idagama or not. In the bhavishyat kale, bhavita, maybe in the lut lakara bhavita, then in the kit pratyaya also, in all the artha dhatu pratyaya, you can understand that this will be the idagama bhavat. यहाँ ये अर्थ निकलता है कि उदात और अनुदात दोनों की भी एक संज्ञा हो सकती है. नहीं, देखिए यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो उदात्तः मतलब पहला स्वर उसका उदात है, और जिसकी हम लोग ने अनुनासिक, वो पहला स्वर अनुनासिक नहीं है. आप ध्यान रखिए, अनुनासिक होता तो उसकी भी संज्ञा हो जाती. ये स्वर अनुनासिक नहीं है. जैसे आप ए ध में देखे, एकार जो है वो अनुनासिक नहीं है. यदि होता तो उसकी भी संज्ञा हो जाती. केवल हकार के बाद में जो अकार है वो अनुनासिक है और वो अनुदात्त है. ठीक है, समझ में आ रहा है? Sir, if you give an example, that will be better, sir. Yeah, that is what I am trying to give. This is the edha vruddhau, spardha sangharshe, spardhate, gadhru, gadh dhatu, gadhate, nadhru, then dadha. All these are atmanepadi pradhatavah, and which are all will be have an idagama in the artha dhatu pratyaya. महोदय एक पॉइंट दत्तमस्ति तत्र नातु अनन्तरं यत् ऋकार अनुनासिक ऋकार अस्ति, तस्य अनन्तरमपि प्रत्ययः अस्ति तस्य. No, this is just for the speaking. There is nothing, no artha. तर्हि ध्याने एव तो नातु तस्य तदेव तस्य इति भविष्यति. एव अवगम्यते खलु? आं महोदय. तो अत्र पश्यन्तु, इत्ये अत्यदादयः उदात्ता उदात्तेतः, उदात्ता उदात्तेतः. So these dhatus are udattah and udattetah. Now what does that mean? उदात्तेतः. महोदय अहं प्रयत्नं करोमि. हाँ, धातोः पूर्ववर्णः तस्य तत् उदात्तः वर्णः न स्वरः. स्वरः उदात्तः आवश्यकम्. अनन्तरम् अन्तिम स्वरे अनुनासिकस्वरः आवश्यकम्. हाँ, अनुनासिकस्वरः आवश्यकमस्ति. सः स्वरः कीदृशः स्वरः? अनुनासिकः.
हाँ, तथापि कीदृशः स्वरः? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अनुदात्त। हाँ, पश्यतु अत्र So what is उदात्त the उदात्तेतः। so what is the difference between Anudatta and Swarita? Both are looks like same. No, Swarit Swarit will have a two or single line on the top, vertical line. Swarita. Okay. Udatta, Anudatta will have a horizontal line in the bottom of the swara. Okay. Acha. And Udatta will not have no markings. Acha. Udatta no line. Okay. Udatta no markings. No marking. Anudatta marking at the bottom. Horizontal marking. Mahodaya, Nidhi. Okay. And Swarita will be on the two vertical marking. Swarita. Okay. Udatta means samanam eva. No, Udatta in the top pitch. Udatta Height. na underline. प्लुत No, No, प्लुत Udatta underline. no स्वरः underline. महोदय Anudatta is the underline. उदात्त इत्युक्ते प्लुत स्वरः Mahodaya, वेदे अस्ति can I tell you? Not Plut Swara only. Prati, No, whatever is spoken to the top of the voice. So Pluta, Hasva, Dirgha and Pluta are different. That because of the time it takes to pronounce that particular swara, like Hasva swara ka iti, Dirgha swara ka iti, Dvikal matra, Pluta swara trikala plus and above. हाँ But here Mahodaya. it is the Mahodaya. place from Nidhi- where it is originating. It is a Anudatta means a bass voice. Udatta means maybe if आप जो audio No log field है, underlining जिसको audio marking. के in the treble जिसको बोलते हैं, on the light on the top pitch of the voice, and Swarita is medium. इत्युक्ते मुखात् उपरि भागः। यस्मात् Mahodaya, सस्वरः itsangya उत्पद्यते। bhavati, tadapi udattah. पुनः एकवारं Tadapi न श्रूयते। udattah. पुनः एकवारं वदतु भगिनि। Mahodaya, krati ida dhatu madhye itsangya सस्वरः उदात्त एव। udattah. हाँ, उदात्तः एव। एते धातवः उदात्तः उदात्तेतः एव। Now I wanted to ask you, what does it mean by udattetah? Bhavati, If possible, Lakshmi Bhagini, can you please open your video so that I can directly, I have to hunt for your voice where it is coming from. If possible. प्रयोग में आएगा ना? Sir, you इसमें So Sir, you said you काति इति धातुः परस्मैपति धातु महोदय अत्र Kadi. Mahodaya, Now, again you Mahodaya. forgot one sutra. All are Can anyone talking. tell me? What was the sutra here? Ye- Agamasya sutra asi. Idito. itsangya bhavati tadapi Idito num dhatoh. udattah. ये धातवः इदिताः सन्ति तेषां किम् आगच्छति तेषु नुमागमः आगच्छति। नुमागमः भवति चेत् कदि अस्ति चेत् कन्द इति भवति। परस्मैपति धातु। हाँ, परस्मैपदी भवति। उदात्तेत इत्युक्ते शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इति सूत्रेण परस्मैपदी प्रत्ययः भवन्ति। Sir, how do we identify between Udatta, Anudatta, and Swarita? I have understood, but is where the place is emanating. I have also gone through this process because when I recited Namakam, Chamakam, that is and all those things, Sanjavandram. But this basically, you see, in Udatta, normally we just come down on our voice, and No, Anudatta, on the top of the voice, Anudatta is coming down. Sorry, on the lower part of the where the particular swara is getting pronounced. Yeah. If it is akuha visarjaniyanam kanthah, so akarasya uchcharana sthana asti kanthah. oh, Kanthasya uparitamah bhagah asti.
Okay. तस्मात् यदा उच्चारणः भवति तर्हि उदात्तः मध्य अस्ति चेत् स्वरितः स्वरितः बिलो अन्ते अन्ते अस्ति चेत् अनुदात्तः. Oh, अच्छा. Okay. Okay. Right. So Right. Right. if you take this portion as a Udgama Sthana, I'm showing my entire thing. Yes. So this is the Udgama Sthana. Right. So Udatta will be the top, Swarit will be the medium, Anudatta will be the bottom. Okay. At the Okay. bottom, but this entire thing is the Kantha. Right. Okay. कंठस्य उपरि वा कंठस्य अधः तत् हाँ, कंठस्य उपरि अस्ति चेत् उदात्तः, अधोभागे अस्ति चेत् अनुदात्तः, अनुदात्तः. मध्ये अस्ति चेत् स्वरितः. Mहोदय. So can we go ahead? I'm stopping that and we can start the new topic. Yes, sir. दृश्यते इदानीं? आम् महोदय. आम्. आम् महोदय दृश्यते. किं किम् अस्माभिः एतावत् पर्यन्तम् अधीतं? धातुभ्यः चत्वारः प्रत्ययः विधीयन्ते. सः सनादि प्रत्ययः, सनादि प्रत्ययः, विकर्ण प्रत्ययः, तिङ् प्रत्ययः तथा कृत् प्रत्ययः. एते सर्वे प्रत्ययः प्रक्रियानुसारं द्विधा विद्यन्ते. There are 4 types of pratyayar which are attached to dhatus, and these 4 types of pratyayar are broadly divided into 2 parts based on the prakriya of getting the padam out of ting and the padam out of it. So sarvadhatuk pratyayah pinchit sarvadhatukam इति सूत्रेण एतेषां पदानां एतेषां प्रत्ययानां तिङ् सार्वधातुक संज्ञा भवति. तिङ्क्षित् सार्वधातुकं तिङ् प्रत्ययः सन्ति अथवा षित् प्रत्ययः सन्ति. मैथिली भगिनी, षित् प्रत्ययः किं नाम? षित् प्रत्ययः Oh, I still have to get the hang of it, Mahodaya. I have an idea, but whatever you have the idea, please tell. Bhavani Bhagini ma vadatu. Maithili Bhagini vadatu. Try. Shing is the etam atmanipati rupam tat pratyaya No. Ting pratyayas, you know what are ting pratyayas? Tiptas ji. Ha. Tiptas ji, mip, sip, das, and then mip, vasmas. There is 9 pratyayas. What about? Or parasmepati. The other thing is Atmanepadi? Ta atam ja yas atam vang it vahim mahim. Mahing. So starting from T of the tiptashi, ending up to mahing, ngakara. All 18s are together called ting. We have learned pratyahara. Hello, ting is also a pratyahara. Starting from T of the tiptashi and ending by mahing, gakara.
It is because we know the anubandha lopah bhavati. Nakarasya anubandha lopo bhavati. Sah itsangyak varnaha. So the original pratyaya is mahi only. But mahing was done to make it a pratyahara. Ting iti. So all ting pratyayas, what Maithili Bhagini has told, are by default sarvadhatuk pratyayas. And shit pratyayas are Usha Bhagini Vadati va? अहं वदामि वा Shashan. महोदय? अहं Visham वदामि वा? सर्वेभ्यः अवसरं ददामि, चिन्ता मास्तु, ददामि. उषा भगिनी वदति वा? शित् प्रत्ययः शित वो भी सार्वधातुकम है और वो है शन शब्द नहीं, वो तो नाम दिया है मैंने. शित किसको बोलते हैं? ओ शित मतलब क्या? श इत. हाँ, श इत. उसको और एक्सप्लेन करिए. इत संज्ञा के सूत्र याद है? याद नहीं है अभी. अस्तु. कोऽपि वदति वा? सत्यादेवी भगिनी. आं महोदय. यस्य प्रत्ययस्य शकारः इत्संज्ञा भवति, that is called शित् प्रत्यय. कीदृशस्य सकारस्य? यस्मिन् सकारस्य इत्यस्य इत्संज्ञा भवति. अन्य कोऽपि न. सत्यादेवी भगिनी. कीदृशस्य सकारस्य इत्संज्ञा? अहं जानामि. न, अन्य कोऽपि मा वदतु. मूर्धन्येन अन्य शकार महोदय. यदा अध्यापकः पृच्छति तर्हि मूर्धन्यनः एवं वदति वा? नास्ति महोदय. तालव्य. अन्यप्रत्यय तालव्य शकार. तालव्य शकारस्य. You are all learning grammar, Vyakarana, so you at least identify at least shakaras. Dantya sakara, तालव्य शकार and मूर्धन्य शकार. मूर्धन्य शकारः लशक्व तदिते इति सूत्रेण इत्संज्ञा भवति. That pratyaya is called shit pratyaya. अवगन्तुं शक्नुवन्ति सर्वे खलु? शित् प्रत्ययः येषां तालव्य शकारस्य इत्संज्ञा भवति, सः प्रत्ययः शित् प्रत्ययः. इदानीं अत्र नाम दत्तमस्ति. शप्, श्यन्, श, श्ना, श्नम् एतेषु कृत् प्रत्ययः अपि अन्तर्भूताः. शत्रु, शानच्, शानन्, चानश्, हश्, श, एष, शथ्यै, शथ्येन्. These are all कृत् प्रत्ययas which are shit. Okay? आहत्य त्रयस्त्रिंशत् सार प्रत्ययः सार्वधातुक संज्ञां प्राप्नुवन्ति. 33, 18 thing and 15 a thing pratyaya, krut pratyaya, which is not a thing. But now when he defines, Panini defines the ardha dhatu, what are the rest of the pratyayas? First sutra, ardha dhatukam sheshaha. Whatever remains out of these 33 pratyayas are ardha dhatukam. These are all called ardha dhatuka pratyayaha. So by default, kta, ktava, tumun, tavyat, anyar, all ardha dhatu, because they don't have a shakarasya sanya and they are not ting pratyayas. Now again there is a little bit of problem or a speciality given by Panini. Although there are ting pratyayas, but these two lakar pratyayas are not sarvadhatu pratyayas. What are they? Ashirling, Vidurling. Ashirling and no, Lingam. not Vidurling. Ashirling and lit, and no? Don't ask me, you tell me. Lit. ting pratyaya. लिंग आशीर्लिंग लकारस्य तिंग प्रत्ययः तथा लिट् लकारस्य तिंग प्रत्ययः
आर्धधातुक प्रत्ययाः सन्ति. Okay, understood? शंका नास्ति एतावत् पर्यन्तम्. I am going very slowly and revising whatever we have done in the previous classes. I have not yet started anything new today. I think I will need multiple revisions, Mahodaya. As someone has suggested, why don't you make one group and study, make a one, whatever you say, Abhyasa. Abhyasa Varga. Let someone lead you, or like Satya Devi Bhagini, Bhavani Bhagini. Then all practice together. Maybe once in a week, not more than that. I think they are all Jambavans in the grammar. We are all. No. सर्वेपि छात्राः एव. Ishu eva. तादृशं न. अस्तु. इदानीं मम प्रश्नः, कति गणाः सन्ति? दशगणाः सन्ति. कारिका मनसि अस्ति वा? उवादि कारिका श्लोकः मया उक्तम्. कारिका मनसि नास्ति महोदय, पठितुं अस्तु शक्यते चेत् वदतु. भवादि लिखितमस्ति. आत्मनेपदी और किसी ने लिखा नहीं है? सत्या देवी भगिनी हाँ महोदय, अहं न लिखितवती किम्? न महोदय. महोदय, अहं भवतः रिकार्डिङ्ग् श्रुतवान्, तं रिकार्डिङ्ग् श्रुत्वा लिखितवान् इति अहं. स्वादिमेव च पदादिभ्य भवादि अदादि जुगादि, like something like that. जुगोत्यादि. वदादिभ्य इत्युक्ते भुवादि एंड अदादि. वदादिभ्य जुहोत्यादि विवादिस्वादिरेव च उदादिश्च रुधादिश्च तनुक्र्यादि चुरादयः. तो पदादिभ्य जुहोत्यादिस् दिवादि स्वादिरेव च तुदादिश्च रुधादिश्च तनुक्र्यादि चुरादयः. All 10 ganas exactly have to be spoken, remembered like this. If I say 4th gana, it should be Divadi gana. It should be 10th gana, Churadi gana. 1st gana, Bhwadi gana. It cannot be anything else. Okay? Is there any particular name, Mahodaya? It is comes under first, second, third, like that? Bhwadi gana is the first gana. Adadi is the second gana. Juhotyadi third gana. Divadi fourth. Swadi fifth. Tudadi sixth. Rudhadi seventh. Tanadi gana eighth. And Kriyadi gana 9 and Churadi gana 10. So if we remember the shloka or the karika what I have said, it will be easier for us to understand and remember the ganas in mind. Because so, yeah. Vadadibhya juhotyadis divadis swadireva cha tudadischa rudhadischa anukrayadi churadaya. भवद्यादादि पदादिभ्य Vadi and Adadi, there is a sandhi. Padadibhya juhotyade divadis swadirevacha. Tudadischa rudhadischa tanukriyadi churadaya. So first one is Bhavad Padadibhya. Vadi and Adadi. There are two ganas combined. Correct. Katham likitam. You mentioned as Davitya. That's the reason I said the problem has come. Sandhi bhavati ataha. Yes. That is a very long before. That is it.
Lot of water is passed. Yes, here. Before this only, sir. Parasmapadi. All gone. Where I have written that I also know. महोदय Before that, sir. गणस्य पूर्वम् अस्ति दशगणः अस्ति तत् पूर्वम् अस्ति आरभे तत्पूर्वं You have made तस्य a आरम्भे। thought before that. मध्ये मध्ये मया पुनः किञ्चित् लिखितमासीत् तु अत्र नास्ति Big chart. तस्मात् उपरि तस्मात् उपरि तस्यापि आदित्यादि जुहोत्यादिर् दिवादिस्वादिरेव च दुदादिश्चरुधादिश्च तनुक्र्यादि चुरादयः Bhavadyadidi. How do you spell the first word, sir? Bhavadyadadi. वादिद्यादि भादिद्यादि Bhavadyadi. भादिद्यादि जुहोत्यादिर् दिवादिस् स्वादिरेव च दुदादिश्चरुधादिश्च तनुक्र्यादि चुरादयः Dhanyavad. अस्तु तर्हि लकाराः कति लकाराः सन्ति वदति वा दशलकारः दशलकारः हा वक्तुं शक्नोति एकैकं कृत्वा वदतु एकैकं कम् आह्वयामि कुमुद् भगिनी वदति वा लट् लकारः हाँ कृपया होगा तो वीडियो देखा है तो सब देख सकेंगे कि कौन बोल रहा है महोदय लट् लकारः लोट लकार बोलिएगा खाली नाम ही बोल दीजिए लट लोट ऐसे करके सीधा लट लोट लिट लंग विधि लिंग आशीर लिंग आप काउंट करिए 10 हुआ कि नहीं लिट मैंने कैसे याद करवाया था सबको याद है अक्षराणि सहितं माहेश्वर सूत्राणि सन्ति खलु माहेश्वर हम अवगन्तुं ऐ उण ऋलिक् ए ओंग ध्यान से सुनिए अ ई उ क्या है अ ई उ तो सबसे पहले लकार कौन सा आएगा लट और ई के बाद में लिट और उ है तो लुट ल अ ई उ लुट और रु रू रिट बाद में ए लेट 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 लोट लोट बाद में अब फिर गीत लकार में देखिए फिर लंग अ ई उ लंग लोंग लुंग लंग और अ ई उ और र रंग अ ई उ र रकार उसमें आशीर्लिंग विधिलिंग बाद में डिवाइड होगा वेद है वो निकल जाएगा लेट है वो वेद में है तो हम लोग लोक में यूज नहीं करते तो वो एक लकार निकल गया उसके जगह पर बाइफरकेट हो गया लिंग लकार आशीर्लिंग लकार हो गया वो आर्ध धातुक में चला गया और विधिलिंग लकार है सार्ध धातुक में आ गया Can you say once again, sir? A is lat. आप अक्षराणि One minute, ma'am, please. Let us, sir. रिलिक ए ओंग आई ये देखिए अकार अस्ति ऐ उण ऋलिक् ए ओंग ये तीन हम लोग ने माहेश्वर सूत्राणि लिए और फिर ऐ उ ऐ उण और ऋ ये माहेश्वर सूत्राणि इसमें यूज किए महोदय सार्वधातुक अर्धधातुक इति किम् अस्ति नाम अपि अस्ति तो मैंने जो when I learned Shibiram, our teacher told us write a e and then
let, like that she said, like that you can understand it easily. Ah. A, E, U, like that you can understand it. So Remember it. lut, lit, lut, Okay. rut, Lut, late, lut, lot, Lot. Lot. lung, Ah. ling, lung, ring. Lung, ring. Just go through the varnas, swaras here marked here. Lut, lit, lut, rit, late, lot. And lung, ling, lung, ring. So these are 6 tit lakaras and 4 nit lakaras. What are tit lakaras? So this lut, lit, lut, rut, late, and lot. 6 are tit lakaras because the it sanya of takara. Having an end by ta. Lot, late, lit, lut. And here 4 are it lakaras having an ending of gukara. Panchama varna of kavarga. So these are bifurcated into tit and git, lung, ling, lung, drung, 4 lakara. So if by thumb, if you know Maheshwar Sutrani, you can immediately recall the name in the exactly the same format. But the prakriya, it is not meant that once you learn the lat lakar, you have to learn the prakriya of the lit lakar. Because the lit lakar is an ardha dhatuk lakara, the prakriya will be different. And the sarva dhatuka, the prakriya will be different. That is why we first learn lat lakar, lot lakar, vidhiling lakar, and lung lakar. These are all 4 lakaras are called sarva dhatuka lakaras. Lat, lot, vidhiling, and lung. Sarva dhatuka lakaras, 4. So we will be focusing on 2 tit and 2 git lakaras for the now. Understood? Tit Yes. and git. Because our prakriya will be different in ardha dhatuka and as well as sarva dhatuka. सार्व धातुक जो मैंने बताया तिंशित सार्व धातुकम, तिंग प्रत्यय और शित प्रत्यय जो है वो सार्व धातुक प्रक्रिया में आते हैं, और तिंग विहाय और त्रयस्त्रिंशत् प्रत्यय नाम विहाय ये सर्वे प्रत्ययः सन्ति, ते आर्ध धातुक संज्ञा प्रत्ययः सन्ति। अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा? शङ्का नास्ति अत्र? Shanka na syat. Hello? I can again go and revise 3rd times in the next class. I don't have any problem. Once more, sir. Once again, last point. Once again, last point is slipped. What was the last point? You said sarva dhatuk, ardha dhatuk. Yeah. See, the name, this lat lot, what we are doing is just for our remembrance sake, that we understand the name of the lakara. We keep it in mind, in our memory. But Correct. that does not mean that we have to form the prakriya in that format only. That we have completed lat lakara gacchati, and again we have to come to the lit lakara jagama. It is not like that. There are 4 lakaras: lat, lot, lung, and vithiling. Yes. Are all following the same prakriyas. So these all 4 are combined to form a sarva dhatuk prakriya, and all other 6 are following a different prakriyas. So we have kept them in a separate group called ardha dhatuk prakriya. So we will be learning sarva dhatuk prakriya, and all sarva dhatuk prakriya will be more or less same. Dhatu changes, the pratyaya remains the same. You can easily identify. Gachet, gachetam, gachati, gachati equal to bhavati, khadati, and gachatu, pibatu, khadatu will be all same.
That will not be any difference. That is why we will be learning Sarvadhatuk separately, Artadhatuk separately. Yes. Clear, sir. Okay. Thank you. Dhanyavad. Just because this is our introduction in the class, we'll start gradually from the Sarvadhatuk Prakriya. So you all understand now Sarvadhatuk Prakriya, Tingshit Sarvadhatukam, and these 4 lakaras are Sarvadhatuk lakaras. Now let us, last time we have discussed a bit about the lakara. Sushma ji, prashnaha asti va? येषां प्रश्नः न सन्ति ते कृपया अनम्यूट भवन्तु. अस्तु. लकारः अपि द्विधा विद्यन्ते. There are 2 types of lakaras, right? We know. So there are some of them are indicating kalaha or samayaha, kalavachak lakaraha. And some are indicating bhavavachak lakaraha, our bhava. It has nothing to do with the samaya. Sushma Mahodaya, bhavatah prashna asti va bhavatyah? So, based on the kala, samayaha, kalavachak lakaraha bhavanti. Te lung, lang, lit, lat, lut, and drut. The 6 lakaras are kalavachak lakaras. They define kala, samaya. Something is happening, something has happened in the past, something will happen in the future. Present, past, and future. So there is, and all these based 4 lakaras are indicating the mood, bhavaha. So are called Vidhiling, Ashirling, Lot lakara, and Drang lakara. Drang lakara. These are indicating our bhava. What we want to say. These are called Vidhiling, Ashirling, Lot, and Drang. Avagantum shaknumanti va sarve. These are 10 lakaras, basically divided into 2 categories. The 6 lakaras are indicating the kalha or the presentness or the past tense or the future tense of a kriya. And balance 4 lakaras are indicated or used to present our bhava of the kriya. Bhavani Bharati Bhagili, Shanka Nasti Khalo? Shanka Asti? sorry. अच्छा, लंग लकार, लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, ते सर्वे कालवाचकाः. न, कालवाचकाः. लट लकार वर्तमान काले, भूतकाले 3 लकाराः कथ्यन्ते. Lung, lung, and lit. 3 lakaras for bhutkala. 2 lakaras for bhavishyat kala. Lut and rit. 2 lakaras for bhavishyat kala. Lut and rit. 3 lakaras for bhutkala. Lung, ung, and lit. And Vartman only 1, lat. There is no difference between present tense and present continuous tense, hence as there be a confusion in our mind, or the Rama is going, Ram goes. There is no difference as such in Sanskrit. Ramaha gacchati, Ramaha gachanasti, anayoho madhye kopi bhedha nasti. Asmakam vivaksha. तत्काल वर्तमान काल वाचालित वर्तमान काल न लकारे वर्तमान काल एव भवति. शत्रु शानचयोः उपयोगः अपि लट् लकारस्य स्थाने एव विधीयते.
अस्तु अस्तु तथा च लेट् लकारस्य अत्र गणना There is no change, no difference in between. आम् Wherever you Astu. can use lat, you can use Shatrusanacho. But there is an additional advantage we will learn of using the Shatrusanacho. We will learn after some time. लेट् Etavat लकार parintam लेट् let लकारस्य lakara veda. Let lakara veda. So we are not तस्य studying. अत्र गणना नास्ति न गणना नास्ति Ganana nasti. अस्तु अस्तु धन्यवादः So bhavavachak lakaraha vidhiling vidhihi ashihi. So there are vidhiling, ashirling and lot lakara. And hetumat bhava, cause and effect. Because the kriya of one is dependent of the other kriya. It's called ring lakara. So 4 bhavavachaka and 6 kalavachaka lakara. Now the sutram, the Panini said where to use the lat lakara. Vartamane lat, the sutra. Here there is also a small karika, which I lat vartamane leta vede bhute lunga langa litastatha vidya shishotu linga lotau lut rutau lunga bhavishyati. So all these 3 are in Bhavishyat Kale. The lung also used in past tense also. So lung, ling means both ling, ashir and vidhiling, and lot lakara is called vidya and ashiri. Vidhi and ashiri. Lata is Vartaman Kala, late Ved Kala, and Bhut Kale Traya Pratyaya, Traya Lakaraha, lung, lang, and lit. लट वर्तमाने लेट वेदे भूते नुंग लंग लिटस्तथा विद्याशिशौस्तु लिंग लोटौ लूट लुटौ दृंग भविष्यति. Just take a screenshot and rather than writing everything. I will go through your video, Mahodaya, pause it and write it down. Okay, okay. After some time, when this one portion is complete, I will be definitely placing it in the PDF as a PDF. But this is always in the work in progress, so I am not. We have this shloka in the Pravesha book also. When they tell us about the different tenses. Vartamanastha arthe dhatoho parha lat lakara pratyaya. So all ting pratyayas are also called lakara pratyaya. We have already seen that. Lakarasya sthane eva tesham vidhim athva adeshah bhavat. Lasya sthane. So we cannot use the pratyaya directly with the dhatu in the sarva dhatu pratyaya prakriya. So first we have to add a lakara, and then replacing the lakara, we will add the pratyayas or ting pratyayas, tittasya. So the sutram will be lasya. We will come again, but this as it has come, so I might as well go. So vartamane lat. Vartamanasya arthe dhatoh para lat pratyayah bhavati. Arabdha अपरिसमाप्तश्च वर्तमानः क्रियायाः आरम्भः अभवत् परन्तु तस्य समाप्तिः न भवति एतावत्पर्यन्तं स क्रियायाः कृते अयं कालः वर्तमानकालः भवति. So if रामः गच्छति, गच्छन क्रियायाः आरम्भः जातः किञ्चित् पूर्वस्मिन् काले, क्रियाया अपि इदानीमपि प्रचलति, स गच्छति, गमन क्रिया प्रचलति अपि, क्रियायाः समाप्ति न भवति इदानीम्. अतः सः कालः लट् लकारः, सः वर्तमान कालः. सः गच्छति,
शिशुः सम्प्रति निद्राति इत्यादयः। सम्प्रति अधुना। सिंपल प्रेजेंट व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस इति संस्कृते भेदः नास्ति। रामः गच्छति अथवा बालकः गच्छति, बालकः गच्छन् अस्ति, अनयोः मध्ये कोऽपि भेदः नास्ति। Whatever you want to write, you can write. It is not present tense and present continuous tense. It is not, there is no difference. Latah shatrushanachau. Latasthane shatrushanachau abhibhavatah. Latah sthane. So it is not different. If you can use, remove the lakara, you can use shatru and shanach pratyaya as the case may be. Sah gacchati. But where it is ideally used is, because see, Ramah gacchati you can always use in a prathama vibhakti. Ramam gacchati you cannot say. Ramam khadati you cannot say. So if you want to use it in any other vibhakti other than the prathama vibhakti, any vibhakti other than the prathama vibhakti, you have to use shatru and shanach pratyaya. इदानीं सः गच्छति, उदाहरण मया दत्तम् अस्ति, चिन्ता मास्तु। सः गच्छति, कोऽपि बालकः अस्ति, सः गच्छति। गच्छन्तं तम् अनुगच्छामि, अहम् अनुगच्छामि। सः बालकः गच्छति, गच्छन्तं तं बालकम् अहम् अनुगच्छामि। I couldn't have said that in a lakara by using the same lakara, but I have to use in the dvitiya vibhakti, gachantam balakam, or whatever, gachantam tam aham anugacchami. I am following that balaka who is going. Balakasya gamana kriya prachalati eva, parantu mama api prachana kriya smat parameva bhavati. सति सप्तमी एव। सति सप्तमी शत्रु प्रत्यय शत्रु यदा तदा शत्रु प्रत्यय अस्ति। धन्यवादः। सूर्यः उदेति, उद्यते सूर्याय नमः। We cannot say नमः in udeti. Suryah namaha we cannot say. But because we have to namah krute chaturthi bhavati. So how to use the chaturthi vibhakti? Because we only have a prathama vibhakti in the kriya pada. So udeti udyat iti shatranta rupa pratipadikam. So udyate suryaya namaha. I am bowing down to that sun which is rising. Sun is rising here also. Surya udeti, sun is rising. But I am bowing down to that sun which is rising. अति सप्तमी अस्ति उद्यते। हाँ, उद्यते चतुर्थी विभक्ति। उद्यते सूर्याय नमः। कीदृशाय सूर्याय नमः? उद्यते सूर्याय नमः। So visheshana visheshayoh bhava. Always when you are writing, always keep in the mind, if you are splitting the word and if one is positioning itself as a visheshana, always keep in mind that vibhakti, ling and vachana will be the same. Udyate suryaya namaha. Nakshatrani akashe shobhante. Akashe shobhamananam nakshatranam sankhya aparimita. So, first is the shobhante. Akashe nakshatrani shobhante. Parantu tesham shobhamananam sankhya aparimita. I couldn't have said that if I can use, I have to use only lakara. So that is why I have to change little bit in the shatru or shanach depending on the case. If it is an atmanepadi, it will be a shanach pratyaya. It will be a parasmepadi, it will be a shatru pratyaya. अत्र तु तद् लाभकरम् इति यदि अहं विस्मृतवती तिङ् प्रत्ययः
तर्हि अत्र पुनः शनिश्चेत् एकवारं वदतु, पुनः एकवारं। यदा अहं कालप्रत्ययाः विस्मृतवती तर्हि पुरुषवाचकः अपि विस्मृतवती तर्हि अत्र शुश्रूषा हाँ, निश्चयेन वक्तुं शक्नुमः। सो केवलं सर लट्लकारस्य सर इदानीं अर्चनां करोति समये ओम श्री सूर्याय नमः इति नमः योगे चतुर्थी एव भवति। नमः इति अव्ययपदमस्ति। अहं नमस्करोमि इति न, नमः एव। अहं देवं नमस्करोमि, परन्तु देवाय नमः। माइंड द सटल डिफरेंस। अहं देवं नमस्करोमि, परन्तु देवाय नमः। Namaha, if I use the word, it is an avyaya padam, and that for that namaha there is always a fourth vibhakti, chaturthi. But when I am using a kriya pada, meaning the same, namaskaromi, then I have to use as a karma pada, tritiya. Sir, in this nakshatrani akase subhante and akase sobhamananam nakshatranam sankhya aparmita, the meaning is different, no, sir? The meaning pruthakasti. कीदृशानां नक्षत्राणां संख्या अपरिमिता, आकाशे शोभमानानां नक्षत्राणां, नक्षत्राणि आकाशे शोभन्तेव, परन्तु तेषां शोभमानानां नक्षत्राणां संख्या अपरिमिता। विशेषणरूपेण अत्र विशेषणरूपेण आगच्छति। Okay, धन्यवाद महोदय, धन्यवाद. Yes. If you all if you don't have any problem, please keep your videos on. So it will be easier for me to, otherwise some question coming out of nowhere. So the one more thing that lat lakara is used, and we have already studied in the class of Sambhashana Varga or Samvada Shalayam. Sma iti prayogena saha. Bhutkale parokshe va अपरोक्षे वा अनद्यतन भूतकाले एव तस्य प्रयोगः भवति. Mind that word, अनद्यतन प्रयोगे, not अद्यतन. अनद्यतन प्रयोगे लट् लकारस्य अपि प्रयोगः भवति स्म इति उपपदे. If sma is used, then we can use a lat lakara to denote anything that has happened in the past, beginning from yesterday onwards, not today, not in the morning. Tomorrow, yesterday onwards, whatever has happened in the past, whether I have seen it or I have not seen it, doesn't matter. But we can use that pratyaya lat lakara to denote by using a sma. So, Yudhishthiraha yajate sma. We have not seen Yudhishthira whether he is doing a yajna or not. So, by default, lit lakar should have been used. Parokshe lit. But tam sutram vaditva punaha tasya api prayogah bhavati. Yudhishthira yajate sma. Yudhishthira lit lakara yadi bhavati chet Yudhishthira ije. Yajate means what your meaning? Yagnayadikam karyam karoti. Astu. महोदय, Even manage also. For managing also yaj आते हैं क्या? No. Yaja is to yagadikam. Then one is a यजमानः बोलते हैं. In many Yajamanaha, languages. what is the person who is doing the yajna karyam? Like family, head of the family, usually they tell. For husband also. Yajamanaha. But actually, Yajamanaha is the person who is doing the yajna adi karyakram. Okay. So the Brahmana will always say Yajamanaha. यज्ञ यस्य करोति सः यजमानः. महोदय, ईजे मध्ये धातु रूप किम् अस्ति? धातु नाम किम् अस्ति? यज धातु. ईजे. उसमें ये यज धातु का लिट लकार रूप है. यजते लट लकार है, वो लिट लकार रूप है.
लिट धन्यवाद। इसमें परोक्षे लिट सूत्र से लिट लकार का प्रयोग होना चाहिए था, लट लकार का, लेकिन ये सूत्र ने उसको बांध दिया, मतलब उसका अपवाद सूत्र हो गया ये। तो लट लकार हम लोग स्म के साथ में परोक्ष में अथवा अपरोक्ष में भी हम यूज करेंगे। महोदय अपरोक्षे अपि एकवारम् आङ्ग्लभाषायां वदति वा महोदय? अस्तु। लिट् लकारस्य लट् लकारस्य प्रयोगः भूतकाले अपि भवितुम् अर्हति। स्म इति उपपदेन सह यदा किमपि कार्यं यथा भूतकाले अभवत्, अहं परोक्षे अपि अभवत् अथवा प्रत्यक्ष अपि भवत्, परोक्षे अपरोक्षे वा। परोक्षे इत्युक्ते I have seen that happening. Aparokshe, I have not seen that happening. अत्र लटस्मे इति सूत्रं लिट् च लिट् लकारस्य परोक्षे लिट् इति सूत्रस्य बाधक सूत्र भवति, or it's an what you say, an exceptional sutra for parokshe lit. You can use lat lakar also in the parokshe here in that sense. Aparokshe va, whether it is a paroksha lat lit or bhutkala or aparoksha bhutkala paroksha, then you can use lata lakara in the sma upapade. When you are using a sma, you can use in any lat lakara starting from yesterday onwards, not today morning, yesterday onwards. अहं अनद्यतन भवेत्। ह्यः पाठशालां गतवती, तत्र छात्रा क्रीडन्ति स्म, like that I can write. हम यह शालां गच्छति स्म, हम गच्छति न गच्छामि स्म, यह अहं शालां गच्छामि स्म, तत्र छालाः क्रीडन्ति स्म। अस्तु महोदय, पुरुष स्त्रीषु उत्तमपुरुष प्रथमपुरुष भवति, स्म एव। अहं गच्छामि स्म, त्वं गच्छसि स्म, बालकः गच्छति स्म, गुरुः माम् अध्यापयति स्म, पिता मां ब्रवीति स्म। But this is aparokshe, and the previous one was parokshe. We have not seen Yudhishthira doing the yaga, so aparoksha bhutkala. तस्मिन्नपि वयं लट् लकारस्य प्रयोगः दृष्टः। इदानीम् अपरोक्षे अपि Guru Mam Adhyapayati, I have seen the thing happening. This is in front of me because he was teaching me only. Tasminnapi vayam sma iti padasya upyogena saha lat lakarasya prayogam kartum shaknumah. महोदय, बहु पुरातने से अहं वार्तां करिष्यामि, तर्हि स्म प्रत्ययस्य उपयोगः न भविष्यति। रामायणे अपि कर्तुं शक्नोति। रामः गच्छति स्म, रामः लक्ष्मण सीताभ्यां सह गच्छति स्म। अहं तु न दृष्टवती। एतेन कारणेन परोक्षे अपरोक्षे वा इति लिखितमस्ति खलु। अस्तु। लिट् लकारस्य बाधकसूत्र अस्ति। सामान्यरूपेण परोक्षे लिट् इति सूत्रेण लिट् लकारस्य प्रयोगः एव भवेत्, परन्तु अयम् इदं सूत्रं तत् सूत्रं बाधित्वा आगच्छति। लट् लकारस्य प्रयोगः अपि भवेत्, किन्तु स्म इति उपपदे, स्म इति उपपदे। We have to use a sma, then you can use lat lakara also in the paroksha bhutkala or pratyaksha bhutkala. इत्युक्ते कोऽपि भूतकाले अहं वक्तुं शक्नोमि। कोऽपि भूतकाले न, अनद्यतन भूतकाले। Anadhyata, what is not happening today,
Yesterday, Some I 12 cannot say hours that in the before. morning I have eaten tea, I have eaten breakfast in the sma. We cannot use that. It can be used in the storytelling or while in the story, right? No, we can use yesterday onwards, not today's time. Today I have eaten something in the morning, I cannot say using sma. I have to use lung lakar. So लेट वेदे लेट लकारस्य वेदेषु एव प्रयोगः भवति तस्य लट् लकारस्य प्रयोगः अपि भवति लोट् लकारस्य अपि अर्थे भवति. So this is we are not touching that subject. I have just given 2 or 3 examples I found somewhere. So bhavati, generally we use bhavati in the lat lakara. In the late lakara it is bhavati. Priya surye priyo asti agna api asti. ते स्त्रीलिङ्गे भवितुं शक्नोति अग्ना आकारे. So this is not a agnaha agna. It is not agnaha. This is agni. Hey agni. We say lata. Hey agne. Right as sambodhana of agni. But here agna is also used. Ahameva pashunam ishai. So ishit is isha. In the generally loke prashasti asti ishe. To possess something. Or to rule over something. In that case, ishai in the late lakarasya prayoga. So we are not touching that. This is very confusing. So I am not going deep into this. Bhute, lung, lang, lit. Bhute, lung, lang, and lit. Where they are used. भूतकालार्थे त्रयः लकाराः सन्ति. अर्थभेद अस्ति. अत्र सर्वत्र सर्वे लकाराः प्रयोक्तुं न शक्याः. Now that you are going to learn Panini, now you have to understand which lakara to use where. Generally for all lakaras we use lang lakara. Now it should not happen. Okay? Lang samanya bhute. Sorry, lung samanya bhute. Right from the minute before to any date in the past, I can use lung lakara. It is called samanya bhutkala. A minute before to the maybe 5,000 years before, I can use lung lakara. It is samanya bhutkala. But lang lakara is anadyatana lang lakara. That we have seen in the prayoga of sma. It should be anadyantana lang lakara. Yah aham vargam agacham tva shalam agacham. Lang laga yah. So the job should have got completed, Mahodaya. Yeah, definitely. Yeah, my karya is completed. Then only I can use the bhutkala. Or my karya is not yet started. Then only I can use bhavishyat kala. If the karya is started, then lat lakara only. But in practical life, we are using only lang, Mahodaya. Because of, Sanskrit Bharati has thought that it will be easier for us to understand one thing at a time. If we have all 10 lakaras, then we will be just mugging up the rupas and ultimately we end up leaving the study at all. So they have gradually introduced this. And in those who have studied with the Sanskrit Bharati, they were not only teaching Madhyam Purush also and Dvivachanapi also. They were not teaching. Gradually they have introduced. Once the level has been increased, so gradually Madhyam Purusha and Dvivachana has been incorporated in the studies. So when we are using Abhavat, Mahodaya, does it come under the lung or the lung? Abhavat is lung lakara. Abhut is lung lakara. Abhut is lung lakara.
Oh. तस्य पूर्वस्थाने अकारः आगच्छति, तस्य अर्थः किम्? किं पुनः एकवारम्? अभूत् इति भवान् उक्तवान्, तस्य पूर्वस्थाने आदिस्थाने अकारः वयं योजितवान्। लुङ् लङ् इति सूत्रमस्ति, लिङ् अकारः भवति एव। तस्य अर्थः किम् अभवत्? बहु पुरातन एव। न अकारः अस्ति यत् भूतकाले अकारः आकारः वा आगच्छति। लुङ् लृङ् एण्ड् लुङ् लकारे लङ् लकारे सर्वस्थाने अद्युदास्तश्च इति सूत्रं किञ्चित् अस्ति, तत्र अकारस्य आगमः भवति। तर्हि सर्वस्थाने सर्वभूतलकारे अदा स्वरः अस्ति, धातूनाम् आदौ इति स्वरः अस्ति चेत् आ इति आगस्य भवति। किम् अभवत्? Somebody What share have you done? No, screen, Mahodaya. Screen na screen drishyate. sharing, or he has got himself pinned to the screen, something. Anchi kolha. Can you see the screen now? Mahodaya. Idanim drishyate. Drishyate Mahodaya. I should have stopped the screen sharing. So, लुङ् सामान्य भूतकाल, लङ् अनद्यतन भूते, लिट् परोक्ष अनद्यतन भूते। परोक्ष अनद्यतन भूते। महोदय, लङ् इत्युक्ते सर्वस्थाने सर्वभूते। No, today morning something like that. लुङ् is a सामान्य भूते, लुङ् लकार सामान्य भूते भवति, लङ् अनद्यतन भूते भवति। सामान्य भूते Yesterday. इति महोदय, सामान्य भूते। सामान्य भूत का मतलब होता है आज से 1 मिनट पहले या आधा मिनट पहले या 30 सेकंड 5 सेकंड पहले जो हुआ क्रिया खत्म हो गई, उस समय को देख भूतकाल रहे हो गया, हैं। वो शुरू हो गया। वो 1 मिनट पहले का भी जो क्रिया खत्म हो गई, वहां से लेकर के 5000 पहले साल पहले तक जो भी क्रिया खत्म हुई है, उसमें मैं लुङ् लकार प्रयोग कर सकता हूँ। लेकिन आज की जो भी क्रिया है खत्म हुई है, उसमें मैं लुङ् लकार नहीं कर सकता, उसमें मुझे लङ् लकार का प्रयोग मैं नहीं कर सकता, या फिर लिट् लकार का प्रयोग आज में नहीं कर सकता। लिट् लकार और लङ् लकार का प्रयोग कब होगा? अनद्यतन, आज जो नहीं हुआ, कल जो हुआ था, कल या बाद में, पहले, उससे भी पहले, 24 घंटे के पहले। I have a doubt. Gatavati, if I am telling, aham. Gatavati is a tavatu pratyaya. Forget about so Gatavati. it doesn't qualify under this. No, it's no. only kriya We are talking suchaka. about the nagara, ting pratyayas, not the krut pratyayas. Okay. We are confining ourselves as in the lakara. So agachat kam anadyatana bhutakala dya Which one? upyogam agachat iti padam asti. So anadyatana bhutakala Anadyatana bhutakala. For the long past incident or stories, any of the 3 lakaras can be used. Or 3 long past incidents and stories. All 3 lakaras can be used. Mahodaya, assumption. दर्शितमस्ति पश्यतु केवलम् एकवारमेव मया उक्तं खलु. For the events which has happened, or if we are telling some stories which has already happened in the past, we can use all 3 lakaras, lung, lung and lit. All 3 can be used depending on the situation. For directly perceived past events, directly जो मैंने परोक्ष भूतकाल जो मैंने देखा है खुद, then either lung or lung. Anadyatane, from yesterday onwards, which is paroksha, which I have seen, it can be lung or lung. Parokshe,
then expressing something happened just today or a short while ago, better to use lung lakar. A minute before what has happened to anything in the past, samanya bhutkala is lung lakara. And the parokshe will be lit. महोदय क्षम्यतां सामान्य भूत इत्युक्ते 24 घंटा के अंदर हुआ 24 नहीं, घंटा के बाद आज 1 मिनट पहले भी हुआ और 5000 साल पहले भी हुआ। लुंग लकार आप किसी में भी आप यूज कर सकते हैं, लुंग लकार। और जो आज नहीं हुआ है, कल हुआ था और उसके 5000 पूर्व हुआ था, और वो आपने प्रत्यक्ष देखा है, हम लोग देखा नहीं है, लंग लकार का यूज हम लोग कर सकते हैं। और जो परोक्ष में है, जो हम लोग ने देखा नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, वो परोक्ष में है, तो कहानी में हम लोग स्टोरी सुनाते हैं, तो राजा वहां पर हम लोग एक बार राजा आसित हाँ। तब परोक्ष परोक्ष। जैसे राम वनम जगाम, हम लोग ने राम को वन में जाते हुआ नहीं देखा, लेकिन हम लोग को मालूम है राम वनम गतवान, मालूम है कि राम वन में गए थे, तो उसमें हम लोग ये लगा जगाम लिट लकार का प्रयोग कर सकते हैं। या लंग फिर लकार बहु पुरातन ना, हाँ, राम पुरातन, जितना मैंने वही बोला ना, स्टोरी हो, लॉन्ग पास्ट इंसिडेंट्स हो, उसके लिए हम लोग कर सकते हैं। लंग लिट तीनों लकार यूज कर सकते हैं, बहुत पुराना और स्टोरी के लिए। ओके, आज के लिए हम लोग लंग नहीं लगा सकते। आज मैंने सुबह में क्या नाश्ता किया था, वो बोलने के लिए हम लोग लंग यूज नहीं करेंगे, उसको हमको लुंग में ही बोलना पड़ेगा, या फिर कृदंत बोलिए, ठीक है। और लिट लकार कल से बाद पहले परोक्ष में जो मैंने देखा नहीं है, चाहे मैं जीवित हूँ या ना, मगर वो हो गया है इसके लिए। हाँ, अब जो हो गया उसी के लिए तो हम लोग भूतकाल यूज करेंगे ना। नहीं नहीं, इतना पुरातन हो या ना हो, नहीं समझ में आ रहा है मुझे। अभी अभी मैं हूँ, मैं नहीं होंगी तो भी मैं लिट लकार का उपयोग कर सकती हूँ। नहीं, जब नहीं होंगी तब कोई और यूज करेगा ना, आप क्यों यूज करेंगे? समझ में आ रहा है? हम भूतकाल है उदाहरण आप, तो आप लेंगे। भूतकाल हो जाएंगी आप, सॉरी टू हाँ। से दैट, बट आप भूतकाल हो जाएंगी। हाँ तो सत्यम। तब फिर कोई और यूज करेगा, आपको क्यों टेंशन है? ना जानने हम लोग नहीं, एक एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं। लुंग हाँ, लकारस्य प्रयोगः कुत्र भवति, तो लेट मी ग्रेजुअली आई विल कम, डोंट वरी। Sir, Achetana Bhutakal and Samanya Bhutakal one and the same, right? अद्यतन भूतकाल एंड सामान्य भूतकाल के लिए लुंग लकार, Both are same, na? Today सेम is सेम और Adyatana. अद्यतन लुंग लकार बस। Just fine. हाँ, ना हम किंचित अश्रौषम, अश्रौषम वो लुंग लकार का है। No, but both means मैंने same, अभी sir. तक कुछ ना हम जी। किंचित अश्रौषम, मैंने Ashrausham कुछ means नहीं सुना, ityukte kim mahodaya? सुना Artha. श्रवणम, श्रवणम Ashrosham. Astu astu. प्रातः अहम शालपूपम अखादिशम, So these आज padas Akradisham and Ashrosham is lung आज padam. लुंग लकारस्य, लुंग लकार। मैं प्रातः मैंने सुबह का बात किया मैंने, अखादत अखादम नहीं आएगा इसमें, अखादिशम, मैंने सुबह ही नाश्ता किया था, लेकिन मैंने इसमें लंग लकार नहीं यूज कर सकता। पिता गतमासे ग्रामम अगमत, गतमासे, so here I am using anadhyatana also, lung lakar can be used anywhere। पिता गतमासे ग्रामम अगमत,
सीता रामम इत्थम अवादीत, ऐसे बोला सीता ने। हम लोग ने देखा नहीं है, ये परोक्ष में है, भूत में है, स्टोरीज में है, फिर भी हम लोग उसमें लुंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग ने देखा तो नहीं है उसने क्या कहा, हमारे सामने तो नहीं कहा था। ठीक है, राइट फ्रॉम द मिनट और 30 सेकंड, वट एवर बी द पास्ट टेंस, इमीडिएट पास्ट टेंस इसको बोलते हैं, to the storytelling juga, or 5,000 years, 5,000, 10,000 years before any kriya has been completed, you can use lung lakara. Paroksheva pratyaksheva. But these words are difficult for our daily usage, Mahodaya. But because we have not come across this usage, now when we learn this, we will definitely be able to use it. There's not much of a difference. Once we have the time, we'll definitely go for the lung lakara. Okay. Now, lung lakara, lut lakara, and lit lakara have this lakara vikarana pratyaya. Now we have seen the vikarana pratyaya. Oh, time has been over. We have seen the vikarana pratyaya of ganas. All 10 ganas have different vikarana pratyayas like shap, shan, shlu. But these lakaras, which are ardha dhatuk lakaras, have the lakara vikarana pratyaya. Like sya, which is a lit lakara. Tas, which is lut lakara. Shli or sich, which is a lung lakara pratyaya. So we'll get C everywhere. C, she everywhere, depending on the situation. Akar, shit, avadit. So in that case, we have to use the lakara pratyaya first. Vikarana pratyaya in the ardha dhatu sense. Avadit ityukte sambhashana. Sambhashana. Abravit iti. Pravit, we have heard. This avadit is new. He was told something. Agamat is also This new. is a vach dhatu and vad dhatu. We are always confusing between two dhatus, vach and vad. One is vaditum ichhami and one is vaktum ichhami. Vakti and vadati, difference of vakti and vadati. Saha vakti, saha vadati. Let us stop here. Then again we will take some next class. Again we'll expand on the lakaras and we will enter into the anga karyam. Okay, I'll just give little bit explanation on the lakara, which one to use, where, and the prayogas, and gradually we'll come to the prakriya. Okay. Any questions today? No, Mahodaya.